Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back. In previous lecture we talked about the functions of hormones. In this lecture I will talk about the types of glands of endocrine system. Endocrine system, there are two main types of endocrine gland. One are called exocrine glands and other are called endocrine glands. First I will talk about exocrine gland, then I will talk about endocrine gland. The word exocrine, exo mean outside, crine mean secretion, mean to say that this word, the word exocrine means secretions outside the body. It means कि या तो ये ग्लैंड जो है अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड द बॉडी जो है सिक्रीट करते हैं, और या अगर इंटरनली इनकी जो टारगेट है वो इनसाइड द बॉडी है तो उन टारगेट का किसी न किसी तरीके से आउटसाइड द बॉडी जो है लिंक है, विच आई विल एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी. नाउ व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका जो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे मे प्रोड्यूस हार्मोन्स टुगेदर विद अदर प्रोडक्ट्स. सो दे मे प्रोड्यूस हार्मोन्स टुगेदर विद अदर प्रोडक्ट्स. Such as enzymes plus mucus plus enzyme mucus plus HCl and etc. bicarbonates etc. मीन टू से कहने का मतलब ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, वो हार्मोन के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, सच एज एंजाइम हो गया, म्यूकस हो गया, HCl हो गया. और ये भी पॉसिबल है कि हार्मोन बिल्कुल सिक्रीट ही ना करो, सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करे. सो दिस वाज द वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इट मे प्रोड्यूस हार्मोन टुगेदर विद अदर प्रोडक्ट्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ईच एंड एवरी केस एवरी एक्सोक्राइन ग्लैंड will always secrete the hormone. It may secrete other product. So the second characteristic is they secrete their products outside the body, or secrete their product into the cavities of the body. Cavities of the body mean such as stomach जो है वो एक कैविटी है, इस तरह ड्यूडिनम जो है वो एक कैविटी है, इस तरह ट्रेकिया जो है वो एक कैविटीज है, इस तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एपिडिडमस है वो कैविटी है, फलोपियन ट्यूब जो है ये कैविटीज हैं. तो या तो ये अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड द बॉडी डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं, और या ये अपने प्रोडक्ट को बॉडी की जो कैविटीज हैं उनमें सिक्रेट करते हैं. एंड दिस कैविटी इवेंचुअली लीड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सम वे. आउटसाइड द बॉडी which mean these cavities which lead to the outside of the body in some way. Again कहने का मतलब ये कि या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं अपने प्रोडक्ट को बॉडी के आउटसाइड सिक्रेट करते हैं, सच एज अबाउट द स्किन को रिलीज करते हैं, और या इवन अगर ये बॉडी के कैविटीज में अपने प्रोडक्ट को सिक्रेट करते हैं तो उन कैविटीज का किसी न किसी तरीके से लिंक होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी के साथ. This is their second characteristic. The third characteristic is that they may deliver
या they either deliver या transport their product, यहाँ पे मैं एक important word लिख रहा हूँ, their product except hormones. This is important point for MCQs. They either deliver their product except hormones to their targets through ducts, or they may secrete their product directly on the surface, or they may secrete their product directly on the surface. This is very important point, listen to me carefully. बहुत सारे स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्ट ग्लैंड है, डक्ट के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट. ये अपने प्रोडक्ट को या तो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं, या डक्ट इनके बिल्कुल होते ही नहीं है, ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सरफेस के करीब ही रिलीज कर लेते हैं और वहाँ पे इनका एक्शन होता है. आई विल शो इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, they may in the form of a single cell, they may exist in the form of a single cell. Mean to say a single cell can be exocrine gland, such as goblet cells, which secrete mucus or mucin. Mucin is a glycoprotein, such as goblet cell which secrete mucus directly on the surface without any duct. Now, what are their examples? With example, I will explain all these examples. Their examples include, number first, mammary gland, second example is sweat gland, third example is sebaceous gland, and fourth example is lacrimal gland. Lacrimal gland may also called tear glands. All these glands are the example of those glands which deliver their product outside the body through their ducts. Let me explain it with the help of a diagram. Let's suppose this is one mammary gland, this one breast, and inside the breast mammary glands are present, and these are the ducts of mammary gland which lead to the outside. Here milk are produced and they deliver their milk to the outside of the body through their ducts. So there is sweat gland. This is, let's suppose, the skin, and here are sweat glands are present, and these sweat glands produce sweat which deliver, the sweat gland deliver the sweat they produce to the outside of the body, into the skin, to the specific ducts. That's the sweat gland. Another sebaceous gland, let's suppose this is the skin, and the skin hair is present, and the hair is, the root of the hair is called hair follicle. To this hair, adjacent to the hair, two glands are open. One is called sebaceous
these are called sebaceous gland. This one sebaceous gland and this is another sebaceous gland. These glands also open to the outside through specific ducts. They produce sebum. ऑयली सिक्रेशन है, अगर आप नहाते नहीं हैं 2-3 दिन तक तो आपके हेयर जो है वो ऑयली से हो जाते हैं. एक्चुअली इट इज सीबम सिक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड. आपने देख लिया कि सेबेशियस ग्लैंड क्या है, सीबम प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड द बॉडी थ्रू दिस डक्ट जो है डिलीवर करते हैं. अनदर इज लेक्राइमल ग्लैंड. लेट्स सपोज हियर इज योर ब्यूटीफुल आई, दिस द आई, एंड हियर lacrimal glands are present which produce tear, and they deliver the tear to the outside of the body through their ducts. So these were the example. जिस तरह का मैंने कहा था कि exocrine gland mean secretions outside of the body. These are all the examples of what? Example of exocrine gland, and they deliver their product to the outside of the body through their ducts. और आपने ये भी देख लिया कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन ही प्रोड्यूस करें. नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेट अदर प्रोडक्ट्स सच एज it produce, mammary gland produce milk but not hormone, sweat gland produce sweat not hormone, sebaceous gland secrete sebum not hormone, and lacrimal gland produce tear not hormone. Now what are the other glands? For fifth example, which secrete their product to the lumen or to the cavities of the body, pancreas. 4 and fifth example is pancreas. And 6th one are gastric glands. Seventh one is liver. All these 3 glands, they deliver their product through the ducts into the cavities of the body, such as, let's suppose this is esophagus open into the stomach open into the duodenum. That's the duodenum. And you know, in the duodenum, near the duodenum, pancreas is present. And in the pancreas, there are specific cells that are present that are called acinar cell. This one acinar cell, another group of cell called acinus. These acinar cell open into one main duct which is called main pancreatic duct. This main pancreatic duct open into the duodenum with the help of, this opening is called ampoule of water. These acinar cells produced enzymes, produced bicarbonates, etc. And the enzyme and bicarbonates enter into the main pancreatic duct, and the main pancreatic duct open into the duodenum. This is the lumen of the body. And you know that this duodenum lead into the stomach, and the stomach lead to the esophagus, and the esophagus lead to the outside through the mouth. Okay. Now gastric glands are present in the stomach. Let's suppose here is one beautiful gastric gland. This gastric gland produce HCl and an enzyme known as hormone called gastrin. So they deliver HCl and these enzyme into the duct, and to the duct it open into the lumen of the stomach, and you know that stomach lead to the outside of the body through the mouth. And liver, let's suppose here is the liver. The hepatocytes will produce bile, and the bile accumulate in specific ducts. These ducts lead to the gallbladder. They bring the bile produced by liver cell, and this bile is stored in the gallbladder. This is the gallbladder, this is the liver cell. And this gallbladder open into the duodenum through the main pancreatic duct and deliver its product here, bile. And you know that duodenum lead to the outside through the mouth. So the one example, ये सारे ग्लैंड जो थे ये अपने प्रोडक्ट को, क्या मैंने कहा था कि या तो ये प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को डक्ट के थ्रू जो है डिलीवर करते हैं टारगेट तक, और या डायरेक्टली ऑन द सरफेस पे रिलीज करते हैं. डक्ट नहीं भी होते हैं. फॉर एग्जांपल जो म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेल ऑफ द व्हाट म्यूकस सेल which are present in, let's suppose in the trachea. Let's suppose here is the beautiful trachea, and these are the bronchi, and here in the trachea mucus
membrane is present. And in the mucous membrane, you might remember, you studied it in the respiratory system, some goblet mucus secreting cells are present which are called goblet cell. Let's suppose this one goblet cell. This goblet cell, it secretes mucus without ducts. This is, let's suppose this is the surface. Here it secretes mucus and here it comes and accumulate here. Without any duct, it delivers its product to the target. And you know कि the trachea product तो यहाँ पे lumen में आ गया, and the trachea क्या है? Trachea leads to the outside of the body, to the nose as well as to the mouth. So this was all about exocrine gland. Now come to the endocrine gland. The word endocrine means, endo mean inside, crine mean secretion. So means the word, it means secretions inside the body. What are its characteristics? Its characteristics. First, they only produce hormones. Let's finish the Tarzan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك العافية والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والعافية في الدنيا والآخرة. So इसकी first characteristic क्या है? They only produce hormones, and these hormones they transport with the help of blood or lymph. This is their major characteristic. जो मेन डिफरेंस है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन में ये है कि एक्सोक्राइन हमेशा अपने प्रोडक्ट को टारगेट के या तो किसी डक्ट के थ्रू जो है डिलीवर करता है, और या जो है डायरेक्टली ऑन द सरफेस सिक्रेट करता है, और ये जो अपने प्रोडक्ट ये हमेशा हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है, और हमेशा हार्मोन को थ्रू द ब्लड either through the lymph it deliver it to the target. Let's suppose this one gland, इस gland में जो है ये blood vessel enter हो गई है और यहाँ पे capillary में divide हो गई, and these gland they secreted their product with the help of, ये अपने product को जब बनाते हैं तो इनका product जो है vesicles के form में store हो जाता है, तो these vesicles then fuse, जब ये secrete करते हैं अपने product को, fuses with the cell membrane, तो as a result exocytosis occur. So यहाँ पे हार्मोन रिलीज हो जाते हैं. These hormones then first enter into this interstitial space, then enter into the blood capillaries, and enter into the blood. Through the blood they reach to their target. Let's suppose यहाँ पे target है इनका. So here through the blood capillary they move to the outside, and here are their receptor, they bind with its receptor and show its effect over here. So this is its major characteristic. Another characteristic of endocrine gland is that they may present in the form of a single cell, such as for example G cell जो है gastric gland को जो है they produce gastrin, or there are some organs which do not perform only the functions of to produce hormone, they may perform other function but they may also produce hormones, such as किडनी हो गया, जिस तरह एरिथ्रोपोइटिन जो है प्रोड्यूस करता है किडनी, हार्ट जो है एनपी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इस तरह जो है थाइमस जो है ये एक ऑर्गन है लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन है इसका, स्प्लीन जो है, लिवर जो है, ये सारे जो है ऑर्गन है लेकिन कुछ ना कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. कुछ जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर्टिकुलरली इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल ग्रुप ऑफ सेल व्हिच ओनली प्रोड्यूस एंड सेक्रेट हार्मोन्स. दीज आर कॉल्ड ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स include anterior pituitary, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, and plus
pineal gland. These are the major endocrine glands about which I will talk in detail one by one in my other lectures. Both of them, endocrine gland and exocrine gland, most of them they secrete their product through exocytosis. They also through exocytosis and they also through exocytosis. However, there are some exocrine gland which secrete their product in the form of whole cell. Okay, so in next lecture I will talk about chemical nature of hormones. Class finish.